Greetings to all. This is again Madhu Kamra with the passage as an exercise for reading comprehension. And today I shall be discussing about connotative meaning in connection with the other two types of meanings in a passage, which are grammatical as well as referential. So the title of the passage is COVID's Cupid. Here you find that Cupid is something which associates meaning. So, Cupid you find is God of love. The title of the passage is COVID's Cupid. Here you have apostrophe S, which shows that this is Cupid is possessed by COVID. कोविड टाइम पे जो लव की बातें हो रही हैं सो क्यूपिड इज गॉड ऑफ लव ही इज अ रोमन गॉड और इसका जो टाइटल है इसमें कोविड को रोमन गॉड के नाम से क्लब कर दिया गया है इसका एक और टाइटल है which is a virus induced quarantine scripted the reenactment of a youthful romance of long ago. So, youthful romance connects it with Cupid. तो देखते हैं this is written by Juxuraya and this is a beautiful humorous passage. इस पैसेज में आप देखेंगे कि ह्यूमर है हास्य है दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट सो इट बिगिंस एज देखते हैं इसका मीनिंग शुरुआत करते हैं व्हेन बनी एंड आई इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पैसेज जो है वो नैरेटिव है इसके बाद के कितने टाइप्स ऑफ पैसेजेस होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसोसिएटेड मीनिंग क्या होता है जिसको हम कोनोटेटिव मीनिंग बोलते हैं इसके बारे में ये पैसेज है सो इट रीड्स एज व्हेन बनी एंड आई वाज सिमल्टेनियसली स्ट्रक डाउन बाय द नेस्टी बग नाउ हियर यू फाइंड दैट दिस नेस्टी बग is associated with corona. So it talks about that this bug is one that bites. तो कहते हैं कि जब हम दोनों को एक साथ कोरोना हुआ and put ourselves in home quarantine added to the anxiety of possible hospitalization. That is, we were worried that in case we are hospitalized, even though we were at home, and or worse was the emotional dislocation of having lost our individuality. So, this is something which is very important. He says that we were at home, not in a hospital. We were in a state of anxiety, and the worst form of anxiety, ये anxiety हमारी worst क्यों हो गई? क्योंकि emotional dislocation हो गया. We had lost our individuality and we had become anonymous statistics. आप देखिए कि कोविड पेशेंट्स की गिनती हो रही थी 1 2 3 4 तो कहते हैं हमारे नाम खो दिए हमने और हमारी पहचान क्या हो गई वी वर एज अ नंबर नाउ वी वर गिवन अ नंबर वी हैड बिकम anonymous statistics we were a part of anonymous statistics anonymous is जिसकी कोई जान पहचान नहीं है statistics is number in the soaring graph of corona case load तो हमारी भी हमें भी एक नंबर मिल गया इन दी ग्राफ विच वाज सोरिंग एडिंग अप अब इसका अगर ग्रामेटिकल मीनिंग देखिए तो सोरिंग इज विच वाज इंक्रीजिंग एवरी डे एंड देयर वाज ए बिग caseload of corona that is every day the figures were increasing by hundreds and by thousands that this theft of the self theft देखिए कहते हैं कि हमारे सेल्फ की चोरी हो गई हमारे व्यक्तित्व की चोरी हो गई अब वो कैसे हो गई कि नाम खत्म हो गया था एंड दे वर रिकॉर्डेड एज नंबर तो इस पूरे संदर्भ में आप देखिए कि थेफ्ट इज समथिंग which again is used for depriving of identity आइडेंटिटी को डिप्राइव कर दिया तो ये फिर कोनोट कर रहा है ना क्या दैट दे वर नंबर्स तो एसोसिएटेड मीनिंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है एंड देयर इज सी साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली debilitating experience था ना that is emotionally also they were shattered psychological पहले हम देख चुके हैं कि they were hit by
Anxiety, the physical ravages of the disease. Na? Ravages. Again, this strengthens this associated meaning in a way that could never have been better. In order to prevent cross infection, we had isolated in separate rooms. That both husband and wife, they were in separate rooms and communicated through our mobiles. And mobile is the only tool that each one of them had in order to remain connected. एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही स्रोत था और वो था मोबाइल. From the moment we woke up in the mornings to just before going to sleep at night, we make repeated calls to each other. The content of our conversation was, by and large, of a practical nature. How are you getting on? We had asked each other what our oximeter and thermometer readings were. ये पूरे जितने भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं आप देखिए कि अभी वो रेफरेंशियल मीनिंग के साथ. ऑक्सीमीटर आप जानते हैं क्या काम करता है, थर्मोमीटर क्या करता है, उसकी रीडिंग्स आपको पता है कोरोना टाइम्स में क्यों जरूरत है. रिपीटेड कॉल्स का आपको मीनिंग पता है. कॉन्वर्सेशन इट इज यूज्ड इन द सेम डिक्शनरी मीनिंग. यहाँ पर इनकी जो मीनिंग है वो हिडन नहीं है, दे इन द सर्फेस. जब कभी भी हम मीनिंग को कोनोटेटेड फॉर्म में लेते हैं तो हम हिडन मीनिंग की बात करते हैं ना. इसलिए आप देखिए कि लिटरली जो वर्ड्स का मीनिंग होता है वो वहां पर डाला नहीं जाता ना. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, but these mundane telephonic exchanges, now even this he says is mundane. This was blank, this was bland, this was unhappy, this was repetitive, and this was something which was not exciting but repeated every day. Telephonic exchanges brought back a tidal wave of memories. Here you find that tidal wave, memories is connected with is associated with tides. Suddenly there was a surge in memories. अचानक से memories जो है वो ऊंची लहरों का रूप ले चुकी थी. Of a romance that started in Calcutta over 50 years ago. This made them remember as to how they had started their romance some 50 years back as Bunny's unofficial fiance. That means their engagement was not confirmed. अभी उनका engagement confirmed नहीं हुआ था. I was allowed by my dad to visit Bunny on a daily basis at their home. तो कहते हैं कि मैं उसके घर जा सकता था, इसकी मुझे इजाजत थी. But at 7 p.m. sharp, her dad would call out to the domestic help. घर में जो देख रेख करते थे नौकर, उनको आवाज लगाते थे, राजू खाना लगाओ. See, even though they ate at 8:30, 8:30 खाना खाने की उनका टाइम टेबल था. समय अनुसार वो 8:30 बजे खाना खाते थे, लेकिन 7 बजे वो आवाज देते थे घर के नौकर को, राजू खाना लगाओ, which was enough a clue for this unofficial fiance to leave. कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम घर जाओ. So here you find that this is the hidden meaning. See, it is beautifully used. राजू खाना लगाओ, इसलिए मैंने आपको ये वाला पैसेज दिया है कि 7 बजे ही बोल देते कि राजू खाना लगाओ, और इसका अर्थ होता था कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब कर्फ्यू टाइम है, जाओ यहां से ना. But late at night, both households asleep, Bunny and I would talk on phone till early morning. So here you find that the romance is quite otherwise censored, but still free. कि परिवार के लोगों ने समय का पाबंदी लगा दी है फिजिकल मीटिंग में, but on telephone they were allowed to talk with each other till early morning. What we said didn't matter, couched as it was in the sublime nonsense. So here you find that these hours were very precious to them, where they tried to understand each other, but what they talked was nonsense. So here you find that this makes a very interesting combination. Is that it was a very sublime a share of nonsense, where you find that two of them, they took whatever was talked between them with all seriousness, and now he realizes that they did not talk anything meaningful. It was all nonsense. जो उन्होंने आपस में बातचीत की थी उस समय फोन पे,
रात सारी जागते हुए, वो सब बकवास थी ना, उसका कोई अर्थ नहीं था, अर्थहीन था। लेकिन उन समय चूंकि वो युवा थे, तो ये जो था उनके लिए बहुत ही अच्छा समय था एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, which is the prerogative of all the lovers everywhere. Taboo for eavesdropping ears. So here you'll find that this is the privilege which is enjoyed by lovers, but it was taboo. It was prohibited that others should not hear that. ये एक सुनने वालों पे सेंसरशिप थी कि वो लवर्स की बातें ना सुने, वट एवर दे वर टॉकिंग इन द फिट ऑफ रोमांस. इन रिमेम्बरेंस बनी एंड आई रीडिस्कवर्ड. देखिए कोरोना टाइम्स में जो वो याद कर रहे हैं अकेले अपने अपने कमरे में पड़े हुए, कि उनका प्रेम कैसे शुरू हुआ था, कैसे उन्हें मिलने की घर में आजादी थी या पाबंदी थी. तो कहते हैं कि हमने ये रियलाइज किया दैट एज वी वर देन सो आर वी नाउ. जैसे हम पहले थे एक दूसरे के प्रति, हमारा प्रेम अभी भी वैसे ही है. क्यूपिड्स डार्ट्स कैन कम इन मेनी फॉर्म. तो कहते हैं कि क्यूपिड कामदेव के जो बाण हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, और अभी आप देखिए कि कोरोना को उसके समान माना गया है. तो here you find that the hidden meaning is that this virus is connected with the image of the darts of Cupid. And here he says, not excluding the spike of the coronavirus. So here you find that the spike is very important. Here you find that the spike is related to the darts of don'ts. ये मत करो वो मत करो कि जो डार्ट्स हैं उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है. तो इस पैसेज में हमने ये देखा कि कोनोटेटिव मीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और कोनोटेटिव मीनिंग अगर आप इसमें पैसेज में लोकेट नहीं कर पाए तो फिर आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. और पूरा का पूरा हास्य जो है वो कोविड पे डिपेंड करता है हियर. So COVID is the key idea here, and this is a passage which talks about how COVID time had made them feel their romance afresh. तो अब देखते हैं इसके questions. Choose the correct answer. Theft of the self implies पहला है इमोशनल डिसलोकेशन, आइडेंटिटी डिसलोकेशन, आइडेंटिटी इरेज, और यहाँ पर आइडेंटिटी सस्पेंडेड. जब तक आप कोरोना पेशेंट है तब तक आप एक नंबर है, और उसके बाद फिर से आपको आपका नाम मिल जाता है, इसीलिए दिस इज द राइट आंसर. Anonymous statistics indicate loss of self, loss of identity, named as number, then counted as numbers. तो यहाँ पर सेल्फ इज अ नंबर. हर सेल्फ को एक नंबर दे दिया गया है. तो हियर दिस वे दे आर काउंटेड एज नंबर. कमिंग टू द थर्ड, आइसोलेशन प्रिवेंट्स. आइसोलेशन किसको रोकता है? कोरोना कंट्रोल को, क्रॉस इन्फेक्शन को, म्यूचुअल इंटरैक्शन को, या फिजिकल इंटरैक्शन को. तो इवन दो कोरोना को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य तो क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना है. तो कोरोना कंट्रोल इतना स्पेसिफिक नहीं है आंसर, क्रॉस इन्फेक्शन इज मोर स्पेसिफिक, इसलिए हमने इसको चुना. राजू खाना लगाओ implies कर्फ्यू टाइम, ईटिंग टाइम, sleeping time, or leave the space. तो leave the space is more correct because physically he has to leave, and Juk Suraya can connect with his beloved on a telephone, and telephone time is not censored by the family. So the last question is, we were then, so are we now, means as partners we are the same, as couple we are the same, as lovers we are the same, and none of the above. So here you find that he realizes that they are still the same as they were at the start of their romance in matters of love. Thank you, students, for listening to me.